Rakesh ji is one of those few scholars who really goes deeper into a subject. And some of his articles 12, 15 years back in our magazine has been so highly appreciated. Especially one of my favorites is the one on Mrityu Bhag. Am I right, Rakesh ji? Yes, सही है. And the other one is on the activation age of planets. Am I right? आपने लिखा था. बिल्कुल बिल्कुल. What happens is, for example, Mars people take 28 years. Okay. Venus 24, 23. I'm forgetting now. Okay. These are all basics में हम लोग use करते हैं. Mrityu Bhag, there are several tables. Okay. Activation ages in different classics are several. People learn only one. They teach the same thing to their students, who again teach the same thing to their students, and this is how knowledge gets corrupted. My business is creation of knowledge and removing the dead knowledge out. So my mind is always here. And where scholars are making mistake, especially YouTube astrology is called puppy astrology. Puppy log ke liye. Okay. I'm sorry to say that even I am on YouTube. Okay. But serious scholars don't come on YouTube. And what happens? This is what my guru said, and the story ends there. But our gurus are our rishis. And rishis also had different opinions, different tables. You need to know what in Mrityu Bhag, which classic Jatak Parijata, Saravali, K.N. Rao, then you have to go to modern. K.N. Rao has modified that. Prashna Marga also has that. Okay. So, like Vish Gatika. Okay. Vish Gatika is very, the poison degree. Okay. For nakshatras, for rashis, brilliant predictions you can make. Absolutely brilliant predictions. Okay. So, one of these reasons, what happens is, for example, I'm forgetting Mars in the second house, Rahu in the seventh house. After I'm forgetting this shloka, it's in chapter 45 in the commentary, okay, BPHS, the one on avasthas, okay, G.S. Kapoor. This thing beautifully has taken, absolutely beautiful. The last shloka, no, not the last shloka, 8-10 shlokas before in chapter 45. So there the avasthas is given this Mars 2nd, Rahu 7, something like that, the combination. That after marriage in 3 days, the spouse will die due to snake bite. But if the avastha is not there, correct, it will not happen. Are you all understanding? We don't use avasthas. We are forgetting the rishis. So I appreciate his guru, Rakesh ji's guru. Okay, Shakti Mohan Singh ji, absolute legend. You should read his book, Kal Chakra Dasha. Nice, absolute nice research work that they have done. Okay. So this is one sect of people in Jaipur. Jaipur is known for commercial astrologers, but real scholar astrologers, this one group, Shakti Mohan Singh ji, Rakesh ji, and all. So hats off to the hard work that you guys have been doing. All yours. I am sorry I had to say all this, because if we do not correct astrology, it will only become, astrology will become AI, artificial intelligence, chat GPT. It will reach that stage. So there has to be, in every yuga, every decade, there has to be couple of flame holders who carry astrology in the shastraic manner. Shastra है, शास्त्र के हिसाब से ही सीखना है. It is a shastra. You have to learn it like that. Okay. Yes, I do understand we all have limitations of not by hearting Sanskrit shlokas, etc. Okay. But certain shlokas we can by heart. To bring people back to the classics. So anyway, thank you, Rakesh ji, for bringing people back to classics. All yours. Please, you can share your PPT.
सर दिखाई दे रहा है? यस, स्टार्टिंग स्क्रीन शेयरिंग, यस, फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। मैं सबसे पहले सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी और उनके समस्त जो कार्यकर्ता है उनको नमस्कार करता हूँ, जो हमको ज्योतिष से संबंधित विधाओं का परस्पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करते हैं। और मैं अपने गुरुजी श्री शक्तिमोहन सिंह जी के चरणों में भी सादर नमन करता हूँ। जैसा अभी सुनील सर ने बताया कि शास्त्र के आधार पे हमको बात करनी चाहिए। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि आप कुछ भी बोलें, शास्त्र से इधर उधर हमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने इतना दिया है कि हम अभी उसका छोटा सा भी अंश नहीं देख पा रहे हैं। Yeah. So Rakesh ji is saying basically, first of all, his thanks to all the volunteers and the Saptrishi family. He also wants to bow down to the feet of his Guru, Shakti Mohan ji. And he is reminiscing a saying of his Guru where he's saying that we should always stick to the traditional texts and we should not deviate from traditional texts. Thank you. मेरा जो विषय है वो है प्रेत बाधा। अब मैं यहाँ एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, यह एक लंबी बहस का विषय हो जाता है। मेरी चर्चा का उद्देश्य भूत प्रेतों का अस्तित्व स्थापित करना नहीं है। ज्योतिष के विभिन्न शास्त्रों में उल्लेखित योगों पर चर्चा मात्र है। So Rakesh ji wants to say that this talk is about pretas, which are just the departed soul, right? And it's a very debatable topic. His talk is not about establishing whether these departed souls which are stuck exist or not. He is just only going to discuss different combinations which are mentioned in traditional texts. अपने अध्ययन के उपरांत मैंने ऐसा देखा है कि प्राचीन ग्रंथों में जिन योगों को प्रेत या भूत बाधा कहा है और इनके जो लक्षण बताए हैं, बाद वाले जो आधुनिक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं या विद्वान हुए हैं, उन्होंने उसको मानसिक या मनोरोग कहा है और उनके लक्षण भी ठीक वैसे ही बताए हैं जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित हैं। So he has found in his studies that whatever has been told as this obstacle by these departed souls or obstacle by different ghosts, and what are the symptoms told in traditional texts, exact same symptoms has been told by later people as mental illness, and they totally match with what is told in the traditional text. So it could be departed soul or this ghost troubles, but it could also be mental illness. अमरकोश एक ग्रंथ है, तो अमरकोश में प्रेत का जो शाब्दिक अर्थ बताया है, वह कहते हैं कि किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का वह रूप जिसकी अभी मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ है और उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, वह प्रेत कहलाता है। So as per the ancient text of Amarkosh, the Preta is defined as the soul which has not got the salvation till now, and it has not got the next body, because we believe in rebirth. So it has not got rebirth, it has not got salvation, so it's stuck. That's why it's called Preta. प्रेत का भौतिक शरीर नहीं होता, वह वायु तत्व के रूप में विद्यमान होता है और कहीं भी आ जा सकता है। So pretas do not have a physical body. They behave like air element and can easily go anywhere. गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति देह त्यागता है तो वह मृतक कहलाता है। दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करने पर उसकी संज्ञा प्रेत हो जाती है। दाह संस्कार से 12 दिन तक की जाने वाली पिंडादि क्रियाएं उसे प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। As per Garun Puran, which is another ancient text that we recite when somebody dies in the family,
when somebody dies, he's called a dead body. And then we do the funeral rituals. Then we call him Preta. And from the funeral ritual, we do a 12-day exhaustive rituals for next 12 days. And in that, we do different kind of donation, different kind of havanas and all. And these all activities are done to make sure that he get out of this stuck phase, which is Preta. द्वादशवें दिन वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि को प्राप्त करता है। उस समय बाद जीवित अवस्था में उसके द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मानुसार उसको अन्य योनियां प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। So as per our traditional text, after 12th day, this soul is basically out of Pret in this Pret phase, and it goes to the land of land of ancestors. We call it Pitra Yoni. And after some time, in this Pitra Yoni, once according to his good or bad deeds, till now he gets another birth. Yeah. प्रश्न मार्ग अध्याय 15 श्लोक 42 में उल्लेख मिलता है कि वार्षिक श्राद्ध, उचित दाह संस्कार कर्म न करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा पिशाच योनि में पहुंच जाती है और वह अपने संबंधियों को बाधा पहुंचाती है। So as per Prashna Marga text, chapter 15, sloka 42, if we don't do annual Shraddh karma, in which we do donations of different items to different animals and riverside, or if we don't do the proper funeral rituals, then the dead body's soul, instead of going to Pitra Loka, it goes to the ghost state, and then it starts troubling its own relatives. प्रेत और पितृ में अंतर होता है। पितृ केवल हमारे पूर्वज ही हो सकते हैं जिनका विधिवत संस्कार हुआ हो। प्रेत कोई भी हो सकता है। So these Pret and Pitras are different. Pitras could only be our ancestors who were given due rituals, who were given their funeral rituals and all activities were done properly and methodically, and the ghost could be anybody. ऐसा माना जाता है जब किसी की व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए और उसका विधिवत अंतिम संस्कार न हो, अथवा मृत्यु के पश्चात उसके मन में मृत्यु के समय उसके मन में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह होता है, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। So it's believed in our traditional text, if somebody dies an unnatural death, or his funeral is not done in the traditional way, proper way, or at the time of that he is too much desirous of certain thing or certain person, then he does not get salvation. प्रश्न मार्ग अध्याय 15 श्लोक 42 के अनुसार कहा गया है कि वार्षिक श्राद्ध, उचित दाह संस्कार कर्म न करने पर मृत व्यक्ति की आत्मा पिशाच योनि में जाती है और अपने संबंधियों को बाधा पहुंचाती है। उसकी आत्मा भटकती रहती है और उस वस्तु या व्यक्ति के आसपास मंडराती है जिससे उसका विशेष मोह होता है। So it's believed if we don't do these traditional rituals, yearly rituals for our ancestors, or we did not do the proper funeral rituals, then the dead person's soul is stuck as a ghost. It starts creating obstacles for its own relatives. It wanders around, and it wanders around especially that person or that thing for which it is particularly attached. ये अतृप्त आत्माएं कभी कभी ऐसा माध्यम तलाशती है जिसके जरिए ये अपनी दमित इच्छा या वासनाएं पूर्ण कर सके। सभी व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। केवल वही व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर हो, भावनात्मक रूप से पीड़ित हो, जिनका आत्मबल कमजोर हो, शीघ्र इनके प्रभाव में आ जाते हैं और इनका माध्यम बन जाते हैं। So these unsatisfied soul, they keep on looking for different mediums through which they can fulfill their subdued desires
or I don't know how to call. Yeah, subdued desires basically, and not all people become affected by these ghost or stuck souls. Only people who are very weak mentally, who are emotionally in turmoil, or who are weak in self strength or mental strength, basically become the medium and get influenced by these easily. Otherwise, and people don't usually get affected by these things. ऐसे व्यक्ति के मन में भावुकता, अति कल्पना, अनहोनी को लेकर चिंता और ऊपरी हवा या प्रेत बाधा का वहम बैठ जाता है। उनके व्यवहार में भी निम्न असामान्य लक्षण दर्शित होने लगते हैं। So such people who get affected or who become medium for such souls will have too much emotional turmoil in their mind. They will imagine too many things. They will always worry about something untoward that will happen in their life, or they start talking about or start believing into ghost or some obstacle by ghost and all those things. And in their day-to-day behavior also, we can see these symptoms. हताशा, निराशा, उन्माद एवं हिंसक गतिविधियां। So they are basically dissatisfied, disillusioned. They are emotionally going through swings, and they get volatile and violent also. आत्महत्या या किसी की हत्या का विचार एवं प्रयास। They can even think about killing themselves or some other person, or they can even make an attempt to do so. अकारण हंसना, रोना या गुमसुम हो जाना। So these people can laugh all of a sudden, or start crying all of a sudden, or all of a sudden they become totally destitute. दौरे पड़ना या एक टक शून्य की ओर निहारना। These people can get fits, or they can be lost, fully focused on some kind of void. किसी की उपस्थिति का आभास होना। And they feel like there is some presence around them. लगातार दुस्वप्न आना और उसके बाद असामान्य व्यवहार करना। So they get these repetitive nightmares, and after that they don't behave normally. They can't behave normally to other persons. एकांत में अपने आप से वार्तालाप करना। They can start talking to themselves while they are all alone or in solitude. अचानक अपनी जिम्मेदारी एवं सांसारिक दायित्व से मुंह मोड़ने या घर छोड़कर भागने का मन करना या बार-बार घर से भाग जाना। So all of a sudden they don't want to be responsible. They don't want to carry out their responsibilities. They want to leave their home, or they leave their home or try to run away from their responsibilities and home again and again. Sorry to interrupt, राकेश जी, आप 4-5 sentences बोल दीजिए, then Swaraj will translate in brief, because many people do understand Hindi. ठीक है, ठीक है सर, पूरा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। Okay. प्रेत बाधा मानसिक रूप से प्रभाव डालने के साथ साथ कभी कभी संतान सुख को भी प्रभावित करती है, जैसे संतान न होना, बार बार होकर नष्ट हो जाना या गर्भ में नाश हो जाना, अथवा संतान का मंद बुद्धि या विकलांग के रूप में जन्म लेना। पाराशर और शास्त्र में पूर्व जन्म शापोत्तरण अध्याय में प्रेत श्राप के कारण संतान सुख हानि के योग और उनकी शांति विधि का उल्लेख भी किया गया है। So these obstacles through ghosts, they not only affect the person mentally, sometimes it can even create obstacle in that person having progenies or issues. Some examples are that you will not get child, or the child is miscarried again and again, or when you get the child is retarded, or he is physically or mentally handicapped.
And as per our ancient Parashar Horasas texts, the curses of past life chapter has different reasons for this curse and different combinations where you can have this loss of child and how to pacify this curse. All these are mentioned. प्रश्न मार्ग अध्याय 15 श्लोक 50 में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि प्रेत का प्रकोप या दोष होने पर संतान की हानि एवं रोग पीड़ा आदि अनेक कष्ट एवं अनर्थों का सामना करना पड़ता है। इसकी विधिवत शांति हेतु पार्वण श्राद्ध पिंडदान आदि करना चाहिए। ऐसा करने पर प्रेत प्रसन्न होकर संतान सुख एवं संपत्ति प्रदान करते हैं। Yeah, so as per Prashna Marga, chapter 15, shloka 50, similar things are mentioned that if you are having such obstacles, then you will have progeny issues, you will have diseases, you will have other kind of obstacles and issues in life. And we should try to pacify this with donations. And Pindan is a specific donation that you do for souls. There is a ritual. And if we do such things, then the souls are pacified and they basically bless us with healthy issues or healthy progenies, and they can also bless us with wealth. किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में उपस्थित योगों के आधार पर यह जानकर कि कौन कौन जातक प्रेत प्रभावित हो सकते हैं, समय रहते उसकी मंत्र मणि औषधि चिकित्सा की जा सकती है। ये योग इस प्रकार है। So for any person in his horoscope, based on the combination of planet in his horoscope, we can find out if he is impacted or could be impacted by such souls and obstacles. And in the time, in the appropriate time itself, we can pacify or solve these issues using mantras, using gems, or using different kind of medicines. Some of those combinations are mentioned now. जातक तत्व प्रथम विवेक सूत्र 192 वो कहते हैं राहु से ग्रस्त चंद्रमा लग्नस्थ हो अथवा त्रिकोण में हो, पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हो, तो ऐसा जातक पैशाचिक वृत्ति वाला होता है। Okay. So as per Jatak Tattva, I don't know how to translate Pratham Vivek. It could be first chapter, Sutra 192. So it says if you have Rahu conjunct with Moon in your first house, and if your fifth and ninth house are afflicted by malefic planets or are aspected by malefic planets, then the person himself has this tendencies of being impacted by these souls. यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि लग्न भी पीड़ित हो जाता है या लग्नेश भी पीड़ित हो जाता है तो निश्चित रूप में उसमें उस तरह की प्रवृत्ति आती है, और यदि लग्न पे शुभ प्रभाव भी आ रहा है तो वो मनोवैज्ञानिक भी बन जाता है, ऐसा देखा गया है। Okay, so we want to especially mention that if the ascendant or ascendant lord is also inflicted in this manner, then it is definitely that he will have such tendencies. But it is also seen that if that inflicted lagna or lagna lord has some positive or benefic influence, then such person can also become a psychiatrist. इससे ऐसा पता लगता है कि प्रेत प्रभाव हेतु चंद्रमा जो कि हमारे मन मस्तिष्क और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है, पाप प्रभाव में होना आवश्यक है। क्योंकि राहु को वायु तत्व तथा भ्रम का ग्रह माना है, अतः मन मस्तिष्क पर भ्रम हावी हो जाता है। यथार्थ से अलग किसी अन्य काल्पनिक विचार या प्रभाव को भूत प्रेत का प्रभाव माना है। So this is it's very clear from this that moon, which is basically a significator of our mind and our imaginations, it needs to be in malefic influence. And because Rahu is of air element and a significator of illusions, that's why the mind gets covered in these different illusions, and we start imagining things apart from the reality itself.
This is what is called as Preta effect. Done, sir. पंचम भाव बुद्धि का और नवम भाव भी पंचम से पंचम होने के कारण धर्म बुद्धि विवेक का भाव कहा गया है। अतः दोनों त्रिकोण अर्थात पंचम नवम का भी पाप प्रभाव में होना बताया है। Since the fifth house is related to our intellect, and the ninth, being fifth from fifth, is also related to our religion, our discriminatory intellect. That's why these are also mentioned here. And because both are trine houses, that's why they should also be with some kind of malefic impact. सर्वात चिंतामणि में भी सर्वात चिंतामणि अध्याय 7 और जातक तत्व श्लोक 94 में बताया है कि अष्टम भाव में शनि के साथ निर्बल चंद्रमा हो अथवा राहु शनि या मंगल से युक्त होकर क्षीण चंद्रमा अष्टम भाव में हो अथवा ऐसा ही चंद्रमा किसी दो स्थान में हो तो जातक को पिशाच पीड़ा या प्रेत बाधा होती है। So, as per Sarvat Chintamani 7th chapter and Jatak Tattva Slok 94, if Saturn is with weak moon in 8th house, or Rahu, Saturn, or Mars is with weak moon in 8th house, such a moon placement, if it is in Dusthana, then, and Dusthana has certain houses, then basically the person can be impacted by such obstacles by souls, stuck souls. सर्वात चिंतामणि छठे भाव विचार में आता है कि छठे स्थान में शनि गुल्म रोग करता है तथा राहु केतु की युति शनि से हो तो पिशाच बाधा होती है। Sir, I don't know what is Gulm Rog. You have to explain. गुल्म रोग यानी कि फोड़ा या किसी प्रकार का ट्यूमर। Okay. So in the sixth house, if Saturn is placed, then it will give you some kind of boil or wart or tumor in your body. And Rahu, Ketu, if are conjunct with such Saturn, then you can have this kind of Preta obstacles, Preta based obstacles. वृषण मार्ग अध्याय 12 श्लोक 75 में कहा है कि जन्म पत्रिका में दशम स्थान में शनि का होना और राहु से दृष्ट होना पिशाच बाधा का सूचक होता है। In Prashna Marga, chapter 12, slok 75, it is mentioned that if in your 10th house you have Saturn placed and it is aspected by Rahu, that also shows that you could have obstacles due to Pretas. जातक तत्व और सर्वात चिंतामणि में पुनः कहा गया है कि लग्न में शनि का राहु से संबंध होना प्रेत दोष होता है। It's also mentioned in Shloka 88, Sarvat Chintamani chapter 2 and Jatak Tattva Shloka 95. If you have Saturn in your first house and it is related to by aspect or conjunction with Rahu, that also means you have Pret obstacles, Pret dosha. इसी प्रकार शनि का चंद्रमा से दृष्टि युति संबंध हो या बाधक बाद के से गुलिक का संबंध हो तब भी प्रेत पीड़ा से पीड़ा होती है। So this is also mentioned in other combination where Saturn is either conjunct or aspecting the moon, or Badhaka or Lord of Badhaka house is connected with Gulika in your chart, then also you are supposed, it is said that such a person will be impacted by Pret obstacle, Pret Badha. मेरे देखने में एक महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि किसी जातक का चंद्रमा उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो अथवा चंद्रमा पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होकर मलिन या पीड़ित हो जाए और कुंडली में प्रेत बाधा के योग भी हो तो यह अत्यंत परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जातक इसी आवेश में कभी-कभी आत्महत्या भी कर सकता है। So this is learned from experience that if for certain persons moon is in exaltation or debilitation, or moon is of full moon or no moon dates,
and at the same time it is badly inflicted in your chart, then because of these combinations of Preta Badha, Preta obstacles by stuck souls, a very tumultuous situation can develop. And because of this situation, the person impacted can get highly emotional and can even do suicide. जातक पर प्रेत बाधा ग्रसित होगा या नहीं, यह जानने के लिए उसकी जन्म पत्रिका में उपस्थित प्रेत बाधा के योगों के साथ में निम्न का अध्ययन करना आवश्यक है. So if a certain person would be impacted by such kind of obstacles by pretas, if you want to know that, then we have to study his horoscope of the different combination we just mentioned, but we also have to study following things. लग्न लग्नेश स्वास्थ्य निरोगता हेतु, चंद्रमा मन मस्तिष्क के विचार हेतु, बुध बुद्धि विचार एवं नर्वस सिस्टम हेतु, बृहस्पति ज्ञान विवेक विचार हेतु. मेरा ऐसा मानना है कि जिस जातक की जन्म पत्रिका में उक्त चारों पाप प्रभाव में हो और निर्बल हो, विशेषकर चंद्रमा मृत्यु भाग या विषघटी में हो, साथ ही प्रेत बाधा के योग भी उपस्थित हो, तो उनके व्यवहार और गतिविधि में कुछ न कुछ असामान्य अवश्य दिखाई पड़ता है. So we have to also look at ascendant and ascendant lord for the overall health. We have to look at moon for the mental issues. We have to look at Mercury for the general intelligence and nervous system. And we also have to look at Jupiter for wisdom and this discerning intellect. And it is also believed that if any of these above four mentioned things are in malefic aspect, in malefic impact or aspect, and at the same time, moon is in Mrityu Bhaga or Vish Ghatika, and we have these kind of combinations which are needed for Preta Badha, then such persons' behavior or in their day-to-day activity will see somewhat uncommon behaviors in them, somewhat uncommon activities there. यदि उक्त योगों के साथ जन्म पत्रिका में उत्तम श्रेणी के राजयोग भी उपस्थित हो या आत्मकारक बलि और शोभन हो, तो स्थिति कंट्रोल में रहती है. So, if we have some good Raj Yogas in the horoscope, in spite of these combinations, or if our Atma Karaka is full of strength or is in good position, then this situation is under control. Then this doesn't impact much. मैं यहाँ एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ. फीमेल का चार्ट है 20 जून 1989 का. इस चार्ट में हम देखेंगे कि लग्नेश गुरु छठे भाव में, त्रिक भाव में, मार्केश बुध के साथ और बादकेश बुध के साथ और गुलिक भी साथ है. Yeah. So in this chart, the ascendant Lord Jupiter is in the 6th house, which is a trick house, and it is conjunct with the Maraka because it's the 7th Lord Mercury, and it's Padaka also because it's a dual sign ascendant, and the same Jupiter being Lagna Lord is also with Gulika. So it's triply impacted. Yeah. लग्न में पूर्णिमा का चंद्रमा शनि से युक्त है, केतु से दृष्ट है. So in the ascendant, the moon is of full moon, and it is conjunct with Ketu and Saturn. Sorry, conjunct with Saturn and aspected by Ketu. जन्म लग्न विषघटी में है. And the ascendant is itself in Vishghatika. It's a specific time. बादकेश बुध के साथ में गुलिक का होना, ये सारे योग हमने जो पिछले पढ़े, ये प्रेत बाधा दर्शाते हैं. So here, because of the Badaka Lord, Mercury is conjunct with Gulika, and this kind of other that we have already mentioned combination, this shows that this particular native could be impacted by Preta Badha. इस जाति का के अनुसार
उसे कोई अदृश्य व्यक्ति दिखता था तथा उससे बात करती थी। वह उसे बाहर चलने के लिए कहता था और दौड़े पड़ने पर जातिका घर से बाहर भागती भी थी। परिजनों के रोकने पर अत्यंत उग्र हो जाती थी तथा उनके वश में नहीं आती थी। पिछले वर्ष ऐसे ही दौरे की अवस्था में रात्रि को घर से भागी और अगले दिन दुर्घटनाग्रस्त मृतदेह प्राप्त हुई उसकी। So, according to this native, she used to see this unseen presence. She used to talk to it. This presence used to tell her to go outside. And whenever she used to get these fits, she used to run out of home. And even when the family was trying to, stop her, she would get totally violent and she will not be in control. And last year, when in similar situation during a fit in the night, she ran away from home, and next day she was found dead because of some accident. एक मेल की पत्रिका की और चर्चा करेंगे हम। जन्म लग्न में वायु राशि में वायु तत्व ग्रह राहु के साथ गुरु है। So this is another chart in which in ascendant in the Aries sign, Aries planet Rahu is conjunct with Jupiter. चंद्रमा पर शनि मंगल की दृष्टि है। And moon is aspected by Saturn and Mars. चंद्रमा बुध परस्पर केंद्र में है। And moon and Mercury are in mutual quadrant. लग्नेश त्रिक भाव में। And the ascendant lord is again in Trik Bhava. So ascendant lord here is Venus and it is in 6th house. जातक को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ निरंतर रहती है। जातक बिना बताए रात्रि को घर से दूर कभी शमशान में तो कभी किसी मजार पर चला जाता है। The native feels that there is a invisible power which is constantly with him, and without telling anyone, he will go to the funeral. So we have this funeral place out of city, right? So he will sometimes will go there, or he will sometimes will go to some dead person's grave or something. Yeah. एक फीमेल का और चार्ट है। लग्न में सप्तम भाव में शनि दृष्ट Rahu Mangal. शनि दृष्ट राहु मंगल है। So this is another chart in which in the 7th house, Rahu and Mangal are being expected by Saturn. Third aspect. Yeah. Go ahead, sir. एक सेकंड। हाँ, त्रिकेश शनि की लग्नेश सूर्य पर दृष्टि है। Okay. And this Saturn, because it is again lord of this Trik Bhava, and it has aspect on the sun. लग्नेश सूर्य विष घटी एवं मृत्यु भाग में है। And sun is also ascendant lord here, and again sun is placed in Vish Ghatika and Mrityu Bhaga both. चंद्रमा नीच राशि में शनि के नक्षत्र अनुराधा में है। And moon is placed in debilitation in nakshatra of Saturn, which is Anuradha nakshatra. चंद्रमा बुध परस्पर केंद्र में है। And moon and Mercury are again in mutual quadrant. जातिका को दौरे पड़ते थे, कभी अचानक हंसना तो कभी अचानक रोने लगती है, कभी लगातार अपने आप से बातचीत करती है। ऐसे ही आवेश दौरे में 11 अक्टूबर 2008 को विष खाकर आत्महत्या कर ली। So the native girl, she used to all of a sudden she will start crying. All of a sudden she will start laughing, and she used to get these fits, and she used to talk to herself. And in one such fit on 11th October 2008, she committed suicide by having some kind of poison. मेरा चर्चा का विषय इतना ही है, और मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कि इन योगों को देखें, अनुभव करें और अपनी जानकारी साझा भी करें। So this concludes my talk, and I am hereby asking all the learned people to basically study these combinations and discuss this combination and share
further learnings for these combinations. दूसरा, अब शास्त्र, पुराने शास्त्रों में कभी भूत प्रेत होते होंगे, अब इससे इनकार नहीं करते, क्योंकि जो जो चीजें शास्त्रों में लिखी है कभी ना कभी तो वो रही होंगी या हैं, परंतु आज के समय में हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित होगा, लेकिन जो लक्षण बताए हैं और कुंडली में वो योग उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ न कुछ असामान्यता देखने को मिलती है। So we can't say for sure that this ghost and pretas exist now in today's society. They are mentioned in traditional texts. But even if we don't believe in it, if we have such combination in chart, we will see some unusual activity in the native. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर सुनील जी का धन्यवाद जो आपसे चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं। So my heartful thanks to Sunil ji and everyone present here that I got such an opportunity to present my ideas.